ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Namaskar, Vanakkam. Honorable members, the House joins me in congratulating the Indian contingent on its outstanding performance at the just concluded Commonwealth Games and the Commonwealth Para Games held at Glasgow in Scotland, United Kingdom. India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall, comprising 13 gold, 17 silver and 9 bronze medals. Our para-athletes scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games with 7 medals, including 3 gold, 2 silver and 2 bronze medals. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons. On behalf of the House and on my own behalf, I extend our heartiest congratulations to all the athletes, coaches, support staff, the Indian Olympic Association, the Paralympic Committee of India and the National Sports Federations. Our medal winners will surely serve as an inspiration not only to the budding sports talent in our country but also to every young Indian to pursue excellence through hard work, discipline, determination and perseverance. The House wishes our sportspersons continued success to bring even greater glory to Bharat in the years ahead. Papers to be laid on the table through Dr. L. Muruganji. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 class A in today's revised list of business pertaining to the Ministry of Parliament Affairs. श्रीमान टोहन साहू जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 1 ख पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। श्रीमान राजभूषण सौत्री जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in today's list of business at serial number 1C on the table of the House. Thank you, sir. श्रीमान मुरलीधर मोहोल जी। Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 1D in the list of business for today. Messages from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 31st July 2026, 1 has adopted the following motion that this House do extend time for presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 130th Amendment Bill 2025, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025 and the Government of Union Territories Amendment Bill 2025 up to the first day of last week of winter session 2026. 2. Pass the registration of births and deaths amendment bill 2026. I lay a copy of the said bill on the table. Report of the Joint Committee on the Corporate Laws Amendment Bill 2026. Shriman Vinod Sridhar Davde ji. Honorable Sir, I rise to lay the Hindi and English version of the report of the Joint Committee on the Corporate Laws Amendment Bill 2026 as listed against my name at serial number 1 in today's list of business. Record of evidence of the Joint Committee on the Corporate Laws Amendment Bill 2026. Shriman Vinod Sridhar Davde ji. आदरणीय महोदय जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक संख्या 2 पर अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध कॉर्पोरेट विधियां संशोधन विधेयक 2026 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के रिकॉर्ड की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। Statements by ministers. Shriman V. Somana ji. Respected Chairman, sir,
I rise to make a statement on the status of implementation of recommendation contained in the 10th report of the Standing Committee on Water Resources and Demands for Grants 2026-27 of the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation. A statement showing implementation status of status of all the recommendations contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. श्रीमान सतीश चंद्र दुबे जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कर्जावली में मेरे नाम के सामने कर्म संख्या 2 पर उल्लेखित खान मंत्रालय से संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन निधि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन और उपयोग एक समीक्षा के संबंध में विभाग से संबंधित कोयला खान और इस्पात संबंधित संसदीय अस्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्दृष्टि सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। Dr. Thiru L. Murugan ji to move a motion for nomination of one member to the Committee on Public Accounts. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move the following motion that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha Vice Sri Sugandhu Sekhar Ray, who resigned from the membership of Rajya Sabha with effect from 8th June 2026 to associate with the Committee on Public Accounts for the remaining period of the term of the committee and to proceed to elect in such manner as directed by the chairman one member from amongst the members of this House to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Through Dr. L. Murugan ji to move a motion for nomination of one member to the Committee on Public Undertakings. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move the following motion that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha Vice Sri Devansis Samantre, who resigned from the membership of Rajya Sabha with effect from 25th May 2026 to associate with the Committee on Public Undertakings for the remaining period of the term of the committee and to proceed to elect in such manner as directed by the chairman one member from amongst the members of this House to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Through Dr. L. Murugan ji to move a motion for the election of 10 members to the Committee on Welfare of Other Backward Classes. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move the following motion that this House resolve that the Rajya Sabha do join the committee of both the Houses on Welfare of Other Backward Classes for the term of 1 year beginning from the date of the first sitting of the committee and proceed to elect in such manner as directed by the chairman 10 members from amongst the members of the House to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now matters rise with permission. Shriman R. Girirajan ji. Shriman R. Girirajan ji. 267 has been so many times the chairman has given. No, don't come with these placards. Wilson ji, don't come with these placards. No, this is not correct. You note all the. Srimati, I am going to, Girirajan ji, we are now talking, I am going to call the other person. Srimati Tarsana Singh ji. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस सदन में शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जो करोड़ों भारतीयों के जीवन को
प्रभावित कर रहा है, लेकिन जागरूकता के अभाव में ये अनदेखा रह जाता है। ये विषय है स्लिप एपनिया, अर्थात सोते समय बार बार सांसों के रुकने की समस्या। महोदय, हमारे समाज में तेज खर्राटों को अक्सर सामान्य बात समझ लिया जाता है, जबकि कई बार यह स्लिप एपनिया जैसी गंभीर बीमारी का संकेत होता है। इस बीमारी में सोते समय सांस बार बार रुकती और फिर अपने आप चलने लगती है, जिससे शरीर को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके सामान्य लक्षण है तेज घबराहट आना, सांस में बार बार नींद आना, दर्द होना, दिन भर थकान महसूस होना और काम करते समय नींद आना। इसका असर केवल नींद पर ही नहीं बल्कि हृदय, फेफड़ों और पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। सबसे बड़ी बात है बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि वे इस बीमारी से पीड़ित हैं। महोदय, आज भारत में बढ़ते मोटापे और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के साथ यह समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि देश में लगभग 11 करोड़ लोग स्लिप एपनिया से प्रभावित हैं, लेकिन 90% से अधिक लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती। समय पर पहचान और उपचार न होने से यह बीपी, हृदय रोग, स्ट्रोक, डायबिटीज तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। बार बार ऑक्सीजन की कमी होने से हृदय और फेफड़ों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार और जन स्वास्थ्य के जागरूकता बढ़ाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन स्लिप एपनिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते और उपचार नहीं कराते। महोदय, यदि समय रहते सही जांच और उपचार उपलब्ध हो तो तथा लोग वजन नियंत्रित रखने, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और नशे से दूर रहने जैसी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं तो इस समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। अतः मैं सदन के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि स्लिप एपनिया डॉक्टर अलका गुर्जर जी, डॉक्टर अलका गुर्जर जी प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से मैं आज भगवान देवनारायण जी की पावन स्थली, उनका प्राकट्य स्थली मालासेरी डूंगरी और उनके शौर्य के प्रति सवाई भोज क्षेत्र के एकीकृत विकास की ओर इस सर्वोच्च सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह संपूर्ण क्षेत्र सर्व समाज के करोड़ों श्रद्धालुओं और विशेष रूप से गुर्जर समाज की श्रद्धा और आस्था का आदरणीय प्रधानमंत्री एक प्राकट्य दिवस और विशाल संबोधित किया था। प्रधानमंत्री जी 2.0 के अंतर्गत 48.73 करोड़ की राशि विकसित करने के लिए प्रदान की है। इस राशि से भगवान देवनारायण के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास होना प्रस्तावित है। 5 स्थल है स्थल मालासेरी डूंगरी, क्षेत्र बरनागर, साधु माता की बावड़ी और गढ़बोड़ा का कायाकल्प होना इन 48.73 करोड़ के अंतर्गत होना है। इस विकास को पूर्णता देने के लिए इसे एक सुनियोजित पर्यटन हेरिटेज सर्किट के रूप में विकसित किया जाए, ताकि मालासेरी तक से लेकर सवाई भोज तक पूरे मार्ग पर 4 लेन रोड हो, श्रद्धालुओं के लिए वहां रहने की व्यवस्था हो। राजस्थान सरकार ने भी 2023 और 24 के अंतर्गत सवाई भोज मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए बजट स्वीकृत किया है और राजस्थान की सरकार ने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018-19 में मालासेरी डोंगरी में करीब 19 करोड़ से एक पैनोरमा वहां विकसित किया है। सवाई भोज स्थित जो तालाब है वो एक यूनिक वहां का प्लेस है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से अमृतसर में हरमिंदर साहब उसी की तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी, को नए आयाम मिलेंगे। भगवान देवनारायण की जीवन कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक डिजिटल संग्रहालय और ओपन एयर थिएटर, क्योंकि भगवान देवनारायण का विचार था वो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। सभापति महोदय, इस तरह से न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा बल्कि वहाँ के युवाओं को और ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण पर्यटन के श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी, Thank you, sir. I rise to address first you go, I know him. on one of the important burning issue, that is appeal against. Dadaji, you stay, let him complete, I am Kindly coming save back. my time, sir. I rise to address this August House on one of the important burning issue, that is appeal against acquittal. Sir, I come back to him. Sir, state is the one of the major litigant in the criminal administration of justice. Don't make any running commentary, please. Then I am not going to call anyone. If we are disturbing, I am not going to call anyone. Justice protects us, but justice can protect society only when it is Because that you want the entire wants to listen to you, and you don't listen to anyone. system. That is not democratic way. Two sacred pillars and a fair trial and timely justice. If either pillar weakens, the entire edifice If we are begins not to stopping crumble. the shouting, Sir, I am not going to call the LOP at all. Is rightly I'm telling you close to very the honestly. presumption of innocence. Equally, Parliament, in its wisdom, has vested the state with a statutory right under Section 419 of BNSS to challenge an acquittal where the trial court has committed grave errors of law or appreciation of evidence. Sir, consider that the court rendered its verdict after years of hearing. When there is a You are conviction, shouting, definitely I am not going to call LOP. I am telling when you. there is an acquittal, If you are sitting at your place, then I may call him. victim. If you are not cooperating, I am not going to call him. You are insulting your leader. You are insulting your leader by standing. Sir, kindly take preserve your- my time. You take your Sir, seat. kindly preserve I my will call time. him. You take your seat. Otherwise, I will take your seat. I am not going to call him. Because, sir, an appeal against an acquittal is a matter of the gravity because it reflects the considered view of the state that guilty person may have escaped the due consequence of law. When such an You appeal go back to your seat. You don't know what is discipline. Then you don't know what is discipline. How you can call him? I am not going to call him unless you go back to your seat. You cannot force me. You cannot force me to call anyone. Unless you go back to your seat, I am not going to call him. acquittal was sound, an innocent person continues to live under the shadow of an unresolved prosecution. Unable to take move your seat forward and with call it. life. Sir, the Supreme Madam, I know Court you said have new affection on him. I know you have new affection on him. I will call him. Don't worry. more than 7 lakhs criminal appeals were pending before the various high court. Hidden within these staggering numbers are thousands of appeals against the acquittal, sir. If we are not listening, then if you will call LOP, then they will be shouting here. Through How to painstaking control the house? investigation, courageous witnesses and scientific evidence can ultimately fail, not because the evidence was weak, but because the appeal remains unheard for too long. The